So welcome back to my channel, and today I have the yummiest Indian sweet, of course, because that's my favorite, and I have a quiz for you. So you have to fill in the blanks. तो ये आप गौर से सुनिएगा. डैश की तरह आप गोल गोल बातें घुमाना. तो ये डैश क्या चीज है? You guessed it right. Jalebi. So let's get started on my delicious jalebis, babies. So let's get started on the dough. In a bowl, हम combine करेंगे मैदा, orange edible food color, baking powder, थोड़ा सा दही, पानी, तो जैसे हम हमारा डो को कंबाइन करेंगे, ये डो आप ध्यान रखिएगा हल्का सा रनी कंसिस्टेंसी रहेगा. जैसे वो मिक्स और अच्छा सा ऑल लम्प्स हैव बीन डिसॉल्व, हम इसको कवर करके साइड में रखेंगे. और वन मोर थिंग, वी हैव प्रिपेयर्ड अ शक्कर की चाशनी पहले से, सो दैट इज ऑलरेडी रेडी. एंड नाउ वी आर कीपिंग our dough to ferment just for a little bit of time while we get in our kadhai some cooking oil heated to the perfect consistency. Let's put the jalebi dough into a sauce squishy bottle or into a piping bag. As your oil is nice and hot, we need to make quick little jalebi circles in the hot oil. जैसे हमारी जलेबी नाइस एंड गोल्डन ब्राउन हो जाती है ना, और नाइस एंड ऑरेंजी कैरेमल कलर्ड, वी नीड टू रिमूव इट एंड पुट इट इनटू द शक्कर की चाशनी. एज द जलेबी सोक्स एंड इट डजंट नीड मोर देन अ फ्यू मिनट्स, drizzle a little bit of dried fruits. If you like chocolate like me, you can just do a little zigzag with chocolate sauce, and you can serve it with a delicious ice cream. So dosto, I hope you had a great time watching this simple, easy jalebi. I look forward to your comments. If you make this recipe, do make sure you take pictures and send it to me, because I'd love to see the pictures. Take care of yourself. Take care definitely of the planet as well. See you soon. Ciao.